imagine this, that you walk into a mall and you pick up a t-shirt that says made in India and you smile with a pride like wow, it's made in my country. But here's the real question. Will India actually become the world's textile powerhouse, or will those same t-shirts in the future will be made in Bangladesh or made in Vietnam? So, hi friends, welcome back. Today I'll tell you a story about India's textile industry, the opportunities, the challenges, and whether we are really on a track to hit a $350 billion market by 2030. So, don't worry, I'll keep it very simple and just like a story. So, इंडिया का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इट इज वेरी मैसिव. इट्स द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर फार्मिंग, गिविंग जॉब्स टू अराउंड 4.5 crore people. It also contributes to our GDP at around more than 2%, and right now it's worth around $180 billion. So the government's dream, like government also had some dreams about it. So to almost double it by 2030 and to hit around $350 billion in the market. So it sounds great, right? But जो path है वो इतना easy नहीं है, क्योंकि so what's like inside the industry? So जो cotton है it is still the king, making up to 41% of the market, and उसके बाद आते हैं man made fibers like polyesters which are growing super fast, and फिर आते हैं technical textiles. अब जो cool stuff जो हम लोग cars में, hospitals में और space suits में देखते हैं, it's all about the technical textiles which is growing the fastest. So here's the surprise. जो big money है, it isn't just on selling the cloth, but जो branded clothes होते हैं, they take more than half the industry's profit. This means कि जो value addition है, it matters more than just selling bulk fabric. So think of it like the t-shirt you are wearing. Okay, so journey जो होती है वो t-shirt की, it starts in the cotton field. फिर cotton field से it is spun into the yarn, and फिर yarn जो होता है वो एक fabric में बनता है, and जो fabric होता है उसको dye किया जाता है, finish दिया जाता है, and फिर then it is stitched into a shirt, and then it lands into a wardrobe. सो हर एक स्टेप के अंदर वैल्यू और जो प्रॉफिट होता है वो इंक्रीज होता रहता है, बट रिस्क ऑल्सो इंक्रीजेस, लाइक राइजिंग कॉटन के कॉस्ट या ओल्ड टेक्नोलॉजी जो स्लो कर रही है चीजों को. सो लाइक अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस ऑल्सो, वाई आर पीपल सो होपफुल अबाउट द फ्यूचर? अब जो इंडिया है उन्होंने एक फ्री ट्रेड साइन किया है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया है विद द यूके, विच इज रिमूविंग द टेक्सटाइल टैरिफ्स. एंड जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं वो भी चाइना का +1 स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, जिसमें इंडिया जो है वो एक टॉप चॉइस है. सो अब जो इंडियंस हैं, दे देमसेल्व्स आर स्पेंडिंग मोर ऑन क्लोथ्स बिकॉज ऑफ द जीएसटी रिफॉर्म्स एंड लो इन्फ्लेशन. प्लस जो गवर्नमेंट है इट इज ऑल्सो पुशिंग वेरी हार्ड विथ पीएलआई स्कीम्स एंड मेगा टेक्सटाइल पार्क्स. सो बेसिकली जो विंड है वो हमारे फेवर में, बट इट्स नॉट ऑल रोजी. यू नो, जो कॉटन प्राइसेस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, दे आर हायर देन द ग्लोबल रेट्स. अब जो कंपनीज है उनको ह्यूज कैश रिजर्व चाहिए होता है टू स्टोर कॉटन. सो जो नेबर्स है लाइक बांग्लादेश, वियतनाम, वो लोग ज्यादा चीपर कॉस्ट में सेल करते हैं. एंड अनलाइक जो चाइना की मेगा फैक्ट्रीज है, जो इंडिया की इंडस्ट्री जो है इट इज ऑल्सो स्कैटर्ड इन टू मेनी स्मॉल प्लेयर्स. एंड वाइल वी हैव आवर स्ट्रेंथ, वी ऑल्सो हैविंग बिग चैलेंजेस. सो बाय 2030 जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स है इट कुड अलोन रीच अप टू $28 billion, एंड जो होम टेक्सटाइल्स है इट में ऑल्सो डबल, एंड जो एक्सपोर्ट्स है इट कुड हिट अराउंड $100 billion. सो द रियल सक्सेस जो होगा इसका, इट विल नॉट डिपेंड ऑन ऑन दी prices or on the the profits, but it will solely depend on how India can modernize factories, it can adopt to new technologies and go green. अब फ्यूचर के अंदर जो सस्टेनेबिलिटी है इट विल ओनली डिसाइड दैट हु विल विन द ग्लोबल टेक्सटाइल रेस. सो हियर्स द फाइनल थॉट. अब जो इंडिया की जो टेक्सटाइल स्टोरी है इट कुड आइदर बी अ $350 billion ब्लॉकबस्टर और जस्ट अनदर मिस चांस, क्योंकि जो बेस है वो स्ट्रांग है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन एग्जीक्यूशन. सो व्हाट डू यू थिंक? लाइक विल इंडिया राइज एज द नेक्स्ट ग्लोबल टेक्सटाइल लीडर,